Good morning, everyone. So, आज आबे मेंस मॉक टेस्ट नंबर 10 डिस्कस करबा को जाउचे जोथरे कि आमे टोटली 6टा क्वेश्चन डिस्कस करबा फर्स्ट 4टा क्वेश्चन 15 मार्क्स रो रहइबो एंड लास्ट दुईटी क्वेश्चन 20 मार्क्स रो रहइबो we will structure our answers accordingly in the form of introduction, body and conclusion. But before starting the discussion class, please let me know audio and video mu jaha bhi eti screen re annotate karuchi se gudi सब clear अछि कि नहीं. First of all, very important, audio enough audible अछि कि नहीं and video clear अछि कि नहीं. Just more 2 minutes दउजी. जो मैंने भी लाइव चैट रे ऑनलाइन अछंती से माने मते टिके एटी क्लियर कर दियंदु एंड आफ्टर 90 seconds to 120 seconds, I mean 2 minutes, I will simply assume कि सब क्लियर अछि and I will proceed through my discussion class. ओके तो क्लियर अछि बोली कहउचंदी. फर्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करिया. पर क्वेश्चन मु आपण मानन को भी 15 to 10 to 15 seconds देबी just to read and comprehend and brainstorm on your own. Then मु तार आंसर डिस्कस करिवे. First question. The transition to GST 2.0 marks a shift from a revenue stabilization phase to a phase of structural rationalization and compliance ease. Critically analyze. क्वेश्चन रे कौन पचारची कही कि जो ट्रांजिशन टी हैला जीएसटी 2.0 को सेटा गोटे शिफ्ट मार्क करची फ्रॉम रेवेन्यू स्टेबलाइजेशन फेज टू अ फेज ऑफ स्ट्रक्चरल रैशनलाइजेशन एंड कॉम्प्लायंस इज आकु क्रिटिकली एनालाइज करबा को कहिची ए स्टेटमेंट को. तो जेहेतु जीएसटी 2.0 ऊपर क्वेश्चन अछि वी विल ब्रीफली डिस्कस इन आवर इंट्रोडक्शन कि जीएसटी 2.0 रे जो ट्रांजिशन टी हैला टू जीएसटी 2.0 सेटा कोन सिग्निफाई करूची. The transition
to GST 2.0, it signifies कि जो इंडिया रो मूव रही फ्रॉम एन इनिशियल फेज ऑफ रेवेन्यू प्रोटेक्शन एंड सिस्टम स्टेबलाइजेशन टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल रैशनलाइजेशन जोटा कि देइची क्वेश्चन रे देइची एंड सिंप्लिफिकेशन सिंप्लिफाई करा जाइची प्रोसेस को फर्दर एंड कॉम्प्लायंस एफिशिएंसी कोउथिरे ए ट्रांजिशन टा कोउथिरे आछि जीएसटी रेजिम रे आछि ओके बॉडी रे हमको कोन डिमांड्स को एड्रेस करबार अछि जेतेबेले भी क्वेश्चन को पढिबे सेतेबेले ऑलवेज एटा को फिगर आउट करबा को ट्राई करबे कि क्वेश्चन पचारछि कोन जीएसटी 2.0 ऊपर क्वेश्चन अछि त केवल जीएसटी 2.0 ऊपर जहा जानछथि से लेखि के आसीबेनी क्वेश्चन र डिमांड को मीट करबार अछि सो क्वेश्चन र डिमांड एठी अछि कि जो शिफ्ट टा हैला रेवेन्यू स्टेबलाइजेशन टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऊपर ताकू आबे क्रिटिकली एनालाइज करबा बॉडी बॉडी रे से हेडिंग देबे shift from revenue stabilization to structural reform. First, phase 1 revenue stabilization जोटा GST 1.0 रे carry out होतला revenue stabilization GST 1.0 ठीक अछि एथिरे फोकस कहा ऊपर करा जाउतला एथिरे फोकस करा जाउतला स्टेट्स मानगु केमती कंपेंसेशन दिया जिवो कंपेंसेशन टू स्टेट्स कहा थ्रू रो जीएसटी कंपेंसेशन सेस थ्रू रो देन फ्रीक्वेंट रेट चेंजेस होतला एंड एग्जेम्पशन दिया जाउतला टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यूज एंड exemptions थर्ड कोन होतला रेट स्ट्रक्चर जो थिला जो रेट्स टैक्स स्लैब गुडा सेटा कॉम्प्लेक्स थिला रेट स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स थिला ओके लीडिंग टू जो क्लासिफाई केमती करिवे तो सेथरे डिस्प्यूट्स आसुतला हेवी कॉम्प्लायंस बर्डन एस्पेशली को मानक पई की कॉम्प्लायंस बर्डन थिला एमएसएमई मानकर पई की ठीक अछि सेकेंड हमर कोन आसी गला जीएसटी 2.0 जो थरे कोन हला स्ट्रक्चरल रैशनलाइजेशन हला ओके फर्स्ट कोन हला जो कंपेंसेशन रेजिम थिला ताकू एंड करा गला एंड सेटा स्टेट मान को पुश कला टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फिस्कल डिसिप्लिन सेकेंड पॉइंट रेट को जो टैक्स स्लैब्स हला कि जो टैक्स रेट्स हला ताकू रैशनलाइज करबा को प्रपोजल दिया वाला सो स्लैब्स गुडा का मर्ज करबा को एंड करेक्टिंग द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रेट रैशनलाइजेशन merging and inverted duty structure ro correction then simplification of course question रे ही देइची simplification introduction रे भी हम एटा मेंशन कले कि simplify करा गला रिटर्न्स को जेमती फॉर एग्जांपल ऑटो फील्ड जीएसटीआर हबो fewer reconciliations हे परिबो आउ टेक्नोलॉजी ड्रिवन compliance using data analytics data analytics e-invoicing then हमें कौन मेंशन करिबा compliance is
and administrative efficiency. And administrative efficiency. जो मैनुअल इंटरफेस थिला ताकू रिड्यूस करागला रिड्यूस्ड मैनुअल इंटरफेस लोअर्स टैक्स हरासमेंट टैक्स हरासमेंट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अच्छी सेटा इंप्रूव हैला मैचिंग द enhancing transparency further transparency enhance हैला then uniform procedures strengthen the one nation one tax principle last greater certainty for business improves ease of doing business okay जेहेतु क्वेश्चन रे आमर क्रिटिकली एनालाइज दिया जाइए जेतेबेले भी क्वेश्चन रे कीवर्ड थिबो क्रिटिकली एनालाइज ओके सेतेबेले बॉडी रे ऑलवेज लिमिटेशन बा क्रिटिकल कंसर्न्स ऐड हबो आंसर रे एटा सब बेले मन रखिबे सेइथिपाई कि मु सब बेले कुहे कि जहाँ भी कीवर्ड्स अच्छी क्वेश्चन रे ऑलवेज फोकस ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सबु कीवर्ड हिसाब रे आंसर र स्ट्रक्चर स्लाइटली चेंज हबो जेमति डिस्कस पाई कि जहाँ लेखा हबो सेटा क्रिटिकली एनालाइज पाई कि लेखा हबन जेतु हमर एटी क्रिटिकली एनालाइज कहिछि तो आमे एटी कंसर्न्स आ लिमिटेशन भी लिस्ट करिबा लिमिटेशंस कोन स्टेट माने से माने फिस्कल ऑटोनॉमी तांकर हरई देबे बोली सेटा से फियर करूचंदी दे फियर द लॉस ऑफ fiscal autonomy without compensation support then जो रेट रो रैशनलाइजेशन हैला सेटा मे बी इन्फ्लेशनरी हे पारे रेट रैशनलाइजेशन मे बी इन्फ्लेशनरी देन टेक्नोलॉजी कंप्लायंस करिबारे बाधा आसी पारे स्टिल बर्डन्स द स्मॉल ट्रेडर्स टेक कंप्लायंस रे प्रॉब्लम अछि and GST dispute resolution mechanism ebe bi weak अछि GST dispute resolution mechanism is still weak conclude केमती करिया conclusion should always be optimistic and forward looking always remember this and conclusion be introduction भलिया सब बेले briefly देबे GST 2.0 ऊपर क्वेश्चन अच्छी ना तो GST 2.0 it marks a necessary evolution towards कोथ पे simpler tech driven and growth oriented tax regime ओके डोमेस्टिकली सेटा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करे strengthens the cooperative federalism short form रे लिखुची जेहेतु मु कहूची समस्त को नोट डाउन करिया रे किछि भी प्रॉब्लम हो नथिबो सब वर्ड को एमती लेखिया को गले क्लास टा बहुत लंबा हो जिवो सो एटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मु कहि कहि के लिखुची कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी ठीक अछि एंड जेतेबेले आमे आगो को बढ़िबा गोइंग फॉरवर्ड कंसेंसस बेस्ड रिफॉर्म्स दरकार कोन आहुरी ताकू कंसेंसस बेस्ड रिफॉर्म्स protection of MSMEs and robust dispute resolution एगुड़ी को बहुत क्रुशियल इन एंश्योरिंग कि जो जीएसटी हमर रहिला इट बिकम्स अ स्टेबल एंड इक्विटेबल cornerstone of India's fiscal architecture. Okay.
सेकंड क्वेश्चन रीड करो डिस्टिंग्विश बिटवीन revenue receipts and capital receipts of the union government. Explain why a persistent, this is the keyword here. Why is first distinguish kariba, then explain kariba. These two are the keywords. Why a persistent reliance on capital receipts to fund revenue deficits is often considered a sign of fiscal imprudence. Giving 15 seconds to read and process this question. Union government ର receipts केतेटा पार्ट रे डिवाइड हेची बा क्लासिफाई हेची दीटा पार्ट रे क्लासिफाई हेची फर्स्ट होची तार रेवेन्यू रिसीट देन आसुची कैपिटल रिसीट बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड इम्पैक्ट on asset and liabilities जोटा कि फिस्कल असेसमेंट रो गोटे बेसिस बा बेस फॉर्म करूचंती forming the basis of fiscal assessment. First demand of the question, first we will distinguish but गोटे distinction हमें set up करिबा between revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts and capital receipts. Revenue receipt ର nature कौन एटा होचे recurring receipt without creating liabilities or without reducing the assets. एथिरे कौन से liabilities create हुए नहीं कि एथिरे जो asset थाए सेटा भी reduce हुए नहीं. आरो दीटा component अछि गोटे होची tax revenue सेकेंड होची नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू रे कोन कोन इंक्लूड हुए जेमती इनकम टैक्स हे गला जीएसटी कस्टम्स एटसेट्रा. नॉन टैक्स रेवेन्यू रे कोन इंक्लूड होची इंटरेस्ट रिसीट्स डिविडेंड फीस एटसेट्रा. फाइन्स भी इंक्लूड हे परिबो. पर्पस कोन कि फाइन डे टू डे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जहा अछि ताको फाइनेंस करिबा. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देन फिस्कल इंपैक्ट कोन कि गवर्नमेंट रो अर्निंग कैपेसिटी को एटा रिफ्लेक्ट करे. रिफ्लेक्ट्स the government's earning capacity. Okay. Capital receipt. Capital receipt ର nature कोन एटा होची non recurring. non recurring receipt जे कि either liabilities create करे or
एसेट को रिड्यूस करे उल्टाटा जहाँ रेवेन्यू रिसीट रो उल्टा होची कैपिटल रिसीट कंपोनेंट्स होची यार जेमति कि बोरोइंग्स हला मार्केट लोन्स बा एक्सटर्नल लोन्स देन डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स recovery of loans एगुड़िक हूँ कैपिटल रिसीट रो कंपोनेंट्स पर्पस हूँ कि केमिति जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहिला ताको फाइनेंस करा जिवो और जो फिस्कल गैप्स जो एग्जिस्ट करूची ताको केमिति मीट करा जिवो और फिस्कल गैप्स फिस्कल इंपैक्ट एटा कोन पकाए कि जो पब्लिक डेट आउ एसेट बेस रहिला ताको एटा अफेक्ट करे second part of the question why reliance on capital receipts to fund revenue deficit is fiscal imprudence रेवेन्यू डेफिसिट को फंड करिया पाई कि मीट करिया पाई कि कैपिटल रिसीट ऊपर रिलायंस करिबाटा फिस्कल इम्प्रुडेंस कोन पाई कुआ जाए फर्स्ट पॉइंट होचे डेट फाइनेंस्ड कंजम्पशन जदि आमे आहुरी पैसा बोरो करिकी हमर जो करंट एक्सपेंडिचर ताकू जदि आमे यूज करबा कि करंट एक्सपेंडिचर जनरेट करिया को विथ नो फ्यूचर रिटर्न ताहले ताकू कहजबा डेट फाइनेंस्ड कंजम्पशन राइजिंग डेट बर्डन एथिरे आहुरी डेट बर्डन राइज करि पारे बा अधिका हेई पारे लीड्स टू हायर इंटरेस्ट पेमेंट जेते आमे बोरो करबा ता ऊपर हमको इंटरेस्ट भी तो दबाक पड़िबो ना तो एथिरे कोन होबो इंटरेस्ट पेमेंट हमर आउरी हाई होबो इंटरेस्ट पेमेंट हाई हेले इट विल लीड टू फर्दर क्राउडिंग आउट ऑफ डेवलपमेंटल स्पेंडिंग स्पेशली जो प्राइवेट प्लेयर्स अछंती तांकर क्राउडिंग इन हबनी क्राउडिंग आउट हब दे विल नॉट स्पेंड तांको ट्रस्ट ही आसीबनी erosion of asset base excessive जदि disinvestment carry करा जिवो रेवेन्यू नीड्स पाई कि सेटा कोन करिवो सेटा लॉन्ग टर्म पब्लिक कैपेसिटी को वीक करिवो सो देयर विल बी इरोजन ऑफ एसेट बेस इंटरजेनरेशनल इनइक्विटी फ्यूचर जो टैक्स पेयर माने रहिले एबे जो प्रेजेंट कंजम्पशन करिकी समस्ते करिवे तो तांकू तार यू नो कॉस्ट टा दबाको पड़िबो जो फ्यूचर टैक्स पेयर्स रहिले दे विल बियर द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन वीक फाइनेंशियल डिसिप्लिन तांको ऊपर बर्डन आसी जिवो फ्यूचर जनरेशन ऊपर वीक फाइनेंशियल और फिस्कल डिसिप्लिन एटा गोटे स्ट्रक्चरल वीकनेस को मास्क करूची इन रेवेन्यू मोबिलाइजेशन सो फाइनेंशियल डिसिप्लिन एथिरे सब्सिक्वेंटली वीक हे जिवो
Capital receipts is not a bad thing, but they are also legitimate for asset creation. ତାଙ୍କର persistent use ଯଦି କରାଯାଏ revenue deficit ପାଇଁକି ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ unsustainable fiscal management କୁ prove କରନ୍ତି or signal କରନ୍ତି, they will signal unsustainable fiscal management in India ଯଦି ତାଙ୍କର use କରାଯାଏ to fund the revenue deficit. Unsustainable fiscal management. Domestically tax buoyancy au taku strengthen kariya pai ki au expenditure rationalize kariba is very vital. Going forward ame jodi fiscal responsibility norms and growth oriented revenue reforms upare rely kariba. upare rely kariba जोटा कि बहुत ही essential for long term macroeconomic stability. Next question. High capital expenditure, capex, is the engine for long-term economic growth. Yet, revenue expenditure remains non-negotiable for social welfare. High capital expenditure at a long-term economic growth painki both vital, both important. It is the engine of the long-term economic growth. Yet, kintu revenue expenditure at a non-negotiable for social welfare. In light of this statement, discuss the importance. Discuss, keyword here, importance of maintaining an optimal quality of expenditure in the union budget. Read the question and think about it. 15 seconds ଦଉଛି ମୁଁ ଏଠି. Introduction केमी दबा. Public expenditure, it influences both growth and equity. Influences both growth and equity. ଯେତେବେଳେ कि जो ଆମର जो capital expenditure ରହିଲା से long term productive capacity को drive करे
and revenue expenditure ର କାମ କଣ ସେ it is very essential for social protection, making जो quality of expenditure ରହିଲା making the quality of expenditure a key fiscal concern. Okay, ଏବେ ଆମେ discuss କରିବା role of capital expenditure in long term growth. Capital expenditure ର role कौन on long term growth? First of all आमे जानी छे capital expenditure जोटा करा जाए सेटा कौन productive assets create करा जिवा पे करा जाए. It creates productive assets such as जेमती कि roads है गला railway इमती सब infrastructure assets creation करा पे capital expenditure करा जाए. Generates high multiplier effect by crowding in private investment. ଯେତେବେଳେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସିବ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେଥିରୁ ଫାଇଦା ମିଳିପାରିବ. କ୍ରାଉଡିଂ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ. Okay. Third, enhances the competitiveness and logistics efficiency. And एटा फर्दर कोठी के सपोर्ट करिवो, काहू सपोर्ट करिवो, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करिवो. सपोर्टिंग मेक इन इंडिया. Next, improves the future revenue potential through higher growth and formalization. Then what is the significance of revenue expenditure for welfare? Revenue expenditure रो कौन significance रही है welfare ऊपरे? Social sector obligations को fund करिवा. जेमती कि हेल्थ है गला, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, पेंशन्स एगुडी का फंड करिवारे एटा कामरे आसे. काउंटर्स प्रोवाइड्स काउंटर साइक्लिकल सपोर्ट ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स. देन आहुरी भी मेजर इश्यूज जेमती कि पोवर्टी हैला, inequality and human capital deficit एगुडी को भी एड्रेस करे. Ensures administrative continuity and internal security. Internal security. एबे importance कोन optimal quality of expenditure रो? What is the importance of optimal quality of expenditure? First होची growth welfare balance.
excessive revenue spending, जदि हम excessive revenue spend करिबा, it will limit the fiscal space of the capital expenditure. Then जदि underspend हबो, अंडरस्पेंड हेले वेलफेयर रिस्क आसी पारे कहीं सोशली सोशल जोड़ा हेल्थ हो न्यूट्रिशन हो सोशल सेक्टर ऊपर जोटी भी फंड करा जाउथिला सेतिर इनस्टेबिलिटी आसी पारे एंड वीक डिमांड हे पारे. सेकंड, एफिशिएंसी एंड टारगेटिंग. शिफ्ट फ्रॉम सब्सिडीज टू डीबीटी सेटा लीकेजेस को रिड्यूस करिवो. देन आउटकम बेस्ड बजेटिंग भी अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करिवो. Outcome based budgeting, it will improve the accountability. Fiscal sustainability. Asset creation जो प्रायोरिटाइज करा गले कैपेक्स ऊपर एसेट क्रिएटिंग कैपेक्स ऊपर एटा लॉन्ग टर्म डेट स्ट्रेस को लिमिट करिवो. प्रायोरिटाइजिंग asset creating capex limits the long term debt stress. Fourth, institutional credibility. High quality spend, high quality जिनस ऊपर spend करा गले, higher quality spending करा गले, it will enhance the investor confidence and policy credibility. गोटे ऑप्टिमल एक्सपेंडिचर क्वालिटी को मेंटेन करबा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. मेंटेनिंग द ऑप्टिमल एक्सपेंडिचर क्वालिटी एटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज inclusive and sustainable growth. डोमेस्टिकली एटा एथिपाई कि कौन रिक्वायर्ड कि हमर जो प्रोडक्टिव कैपेक्स रहिला ताको प्रायोरिटाइज करा जाऊ फाइल एंश्योरिंग एफिशिएंट टारगेटेड वेलफेयर स्पेंडिंग. Prioritizing capex along with welfare spending. Going forward amar jo outcome oriented budgeting rahila, outcome oriented budgeting, expenditure reviews and cooperative federalism esobu actually key to aligning growth ambitions with social justice in the union budget. Next question. The post-Mauryan period in India was characterized by political fragmentation but was simultaneously a golden age for foreign trade and artistic syncretism. Elaborate with reference to the rise of the Kushanas and the development of Gandhara and Mathura schools of art.
क्वेश्चन कहला कि जो पोस्ट मॉरियन पीरियड थिला it was characterized by political fragmentation सेतबेले political fragmentation हेइतिला किंतु simultaneously ताको golden age भी कुहा जाउतिला काहेकि ना सेतबेले जो foreign trade आउ artistic syncretism carry out होतिला सेथि पई कि आउ ए जिंसटा को ए स्टेटमेंट को elaborate करिवा को क्वेश्चन कहिछि it is the demand of the question to elaborate with reference to the rise of Kushanas and the development of Gandhara and Mathura schools of art. पोस्ट मॉरियन पीरियड एटा कोठू को टाइमलाइन जाइथिला सेकेंड सेंचुरी बीसीई रु थर्ड सेंचुरी बीसीई एमिति हमें लिखिबा डिस्पाइट पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन it witnessed unprecedented expansion in foreign trade and artistic synthesis, particularly under whom? Particularly under Kushanas, marking a cultural and commercial high point. Political fragmentation कौन हेतिला during the post Mauryan period? First जेतबेले Mauryan central authority collapse हला it led to regional powers. After the collapse of authority, it led to the rise of regional powers such as जेमती Indo-Greeks हेले, Shakas हेले, Kushanas हेले. क्वेश्चन ऑलरेडी कुशानस देइची प्रोवाइड करिची. कुशानस जो माने थिले अंडर रूलर्स लाइक कनिष्क से माने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को यूनिफाई कले. अंडर हुम? अंडर कनिष्क यूनिफाइड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. से माने गोटे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एस्टैब्लिश कले ओवर द सिल्क रूट कॉरिडोर्स. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवर द सिल्क रूट कॉरिडोर्स जोड़ा कि इंडिया और सेंट्रल एशिया, चाइना, रोमन वर्ल्ड को लिंक करुतला. Kushanas and expansion of foreign trade. से माने गोल्ड कॉइन्स इशू करिथिले जोटा कि मोनेटाइजेशन को फैसिलिटेट कला एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को भी फैसिलिटेट कला. इशुएंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स. देन तांकर एक्टिव ट्रेड से माने कैरी आउट करुथिले इन सिल्क, स्पाइसेस, इवरी, टेक्सटाइल्स, प्रेशियस स्टोन्स एटसेट्रा. एक्टिव ट्रेड. पोर्ट्स आउ जो इनलैंड वाटर इनलैंड ट्रेड रूट्स रहिला ताको इंडिया को इंटीग्रेट कला विथ द ग्लोबल कमर्शियल नेटवर्क्स. Connected India with the global networks.
देन लास्ट पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म से कल्चरल ट्रांसमिशन को एड कला अलोंग द ट्रेड रूट्स. Gandhara School of Art, artistic syncretism. It flourished co area रे northwestern India रे under the Kushana's patronage. Kushana patronage. एथिरे स्ट्रॉन्ग ग्रेको रोमान इन्फ्लुएंस रही जोटा कि रियलिस्टिक एनाटॉमी ड्रापेरी वेवी हेयर एगुड़िक सब तार कैरेक्टरिस्टिक्स. थर्ड फर्स्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेज बुद्धंकर एथिरे इलिस्ट्रेट हेतला. को स्टोन यूज करा जाए शिस्ट स्टोन एंड नैरेटिव पैनल्स ऊपर एम्फसाइज बेसी करा जाए. मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एटा को एरिया रे डेवलप हेतला डेवलप्ड इन द गंगा यमुना रीजन. एम्फसाइज कहा ऊपर थिला इंडियन एस्थेटिक ट्रेडिशंस ऊपर जेमती सिंबॉलिक एक्सप्रेशन आउ स्पिरिचुअल कामनेस हे गला. इट एम्फसाइज्ड ऑन इंडियन एस्थेटिक ट्रेडिशंस. एंड बुद्धंकर जो डिपिक्शन थिला सेथरे रॉबस्ट बॉडी एंड मिनिमल ड्रापेरी इंक्लूड हुए. Depicted with एंड एथिरे सेथि तो शिस्ट स्टोन यूज होतला एठी रेड सैंडस्टोन यूज हुए. रेड सैंडस्टोन यूज करा जाउतला. डेवलपमेंट ऑफ जैन एंड ब्राह्मणिकल आइकॉन्स पे एथिरे यूज करा जाउतला. पोस्ट मौर्यन एरा though politically fragmented thila, it was a golden age of trade and cultural fusion. Politically fragmented, but it was a golden age of trade and cultural fusion. Domestically, Kushana patronage तांको द्वारा economic integration और artistic innovation हैला. and in long run Gandhara and Mathura school से माने गोटे फाउंडेशन ले कले फॉर क्लासिकल एंड
Mathura school, they laid the foundation of classical Indian art, reflecting India's openness to external influences while retaining the indigenous creativity. Reflecting openness to external influences while retaining indigenous creativity. Next question. Discuss the reasons behind Supreme Court of India's intervention to protect the great Indian bustard and the key safeguards ordered for power lines in its habitat. Supreme Court ଏବେ जो intervene କରିଛନ୍ତି to protect the great Indian bustard, এটা କୋଉଠୁ stems from its critically endangered status to the urgent need to balance renewable energy expansion with wildlife conservation. Introduction ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? The intervention of the Supreme Court to protect the great Indian bustard stems from its critically endangered status and urgent need to balance renewable energy expansion with wildlife conservation. And आ पछरे reason कौन? Supreme Court रो intervention पछरे reason कौन रही जे? What are the reasons? First, the तारो critically endangered status. It is one of the region. जो great Indian bustard रहिला तांकर जो population रहिची सेटा sharply decline करिची due to habitat loss and anthropogenic threats. So critically endangered status तांकर one of the reason. Then high mortality from power lines. बस्टर्स माने तांकर एक्चुअली गोटे फीचर थाए कैरेक्टरिस्टिक थाए तांकर जो फ्रंटल विजन ना सेटा यूजुअली सेटा पुअर बस्टर्स दे हैव पुअर फ्रंटल विजन जोटा कि तांकर से माने जो पावर लाइंस रहला सेथे तांकर एक्सीडेंट हे जाए मेकिंग कोलिजन्स विथ द ओवरहेड पावर लाइंस जोटा कि तांकर गोटे मेजर कॉज ऑफ डेथ थर्ड फेलियर ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन
inadequate mitigation strategies authorities mane adequate mitigation strategies carry out karunahanti despite scientific warnings, so there is failure of executive action. Constitutional mandate, ଯେମିତି କି ଆର୍ଟିକଲ 21 ଏଠି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଯୋଉଥିରେ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ 48A and 51A clause G ଏଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଏଥିରେ ମେନସନ ରହିଛି କି ସେମାନେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଡ୍ୟୁଟି କି ସେମାନେ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ ହଉଛି ପ୍ରିକସନରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ପ୍ରିକସନରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ এটা जो ইরিভর্সিবল ইকোলজিক্যাল ড্যামেজ রয়েছে ইন ফ্রাজাইল ডেজর্ট ইকোসিস্টম তাকে প্রিভেন্ট করিব। কি সেফগার্ডস কোন অর্ডর করা যাইছি? Key safeguards ordered for power lines. First, undergrounding of power lines. पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड करा जाऊ मैंडेटरी एटा को मैंडेटरी करा जायछि अंडरग्राउंड केबलिंग जो कोर आउ प्रायोरिटी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटेट्स रहिला सेतरे अंडरग्राउंड केबलिंग करा जिवो स्पेशली इन राजस्थान एंड गुजरात काइना से माने सेठी बेसी अधिका देखा जांती। इंस्टॉलेशन ऑफ बर्ड डाइवर्टर्स, डाइवर्टर्स जेहेतु तांकर वीक फ्रंटल विजन रही जो एक्जिस्टिंग ओवरहेड लाइन्स रही टू बी फिटेड विथ बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स टू इम्प्रूव देयर विजिबिलिटी जो थे एक्सीडेंट चांसेस बहुत हद जाए कम हो। कमिटी बेस्ड मॉनिटरिंग, जो एक्सपर्ट कमिटी टू असेस द फिजिबिलिटी कॉस्ट और टाइमलाइन फॉर अंडरग्राउंडिंग ये सब कौन करा गोटे कमिटी बेस्ड मॉनिटरिंग करा जिवो। बैलेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स, जो रिन्यूएबल एनर्जी रो इंपोर्टेंस रो रिकॉग्निशन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्पेसीज एक्सटिंक्शन। कोर्ट रो इंटरवेंशन जो करागला सुप्रीम कोर्ट द्वारा एटा रिफ्लेक्ट करूची कि गोटे राइट बेस्ड एंड साइंस इन्फॉर्म्ड अप्रोच टू एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया। कोर्ट रो इंटरवेंशन इट शोज राइट बेस्ड and science informed approach to environmental गवर्नेंस इन इंडिया। डोमेस्टिकली एटा बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को रीइंफोर्स करूची along with sustainable development, ठीक अछि। एंड गोइंग फॉरवर्ड जदि वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और इकोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट को इंटीग्रेट करी दिया जिवो देन इट विल बी क्रूशियल टू प्रिवेंट द कंजर्वेशन कॉन्फ्लिक्ट्स while pursuing green growth. Okay, so it is important to integrate wildlife sensitive
infrastructure planning and ecological impact assessment, जोटाक बहुत crucial to prevent conservation conflict while pursuing green growth. Last question. Examine the role of land rights and sixth schedule autonomy in triggering recent ethnic tensions in Karbi Anglong. ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ଏଥନିକ୍ ଟେନସନ୍ସ ଚାଲିଛି କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଡିପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଇସ୍ୟୁକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ବା ମିରର କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ସରାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ନାହିଁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଲାଇକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ହେଇଗଲା ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଫଙ୍କସନିଂ ଅଫ୍ ସିକ୍ସ शेड्यूल ऑटोनॉमी ହେଇଗଲା rather than isolated law and order failure. So introduction we will write recent ethnic tensions in Karbi Anglong deeper structural issues surrounding land rights, demographic change, and the functioning of the sixth schedule autonomy rather than isolated law and order failures. Core trigger कौन land rights होची core trigger, land rights as core trigger. जो कस्टमरी लैंड ओनरशिप रही इंडिजिनियस कार्बी कम्युनिटीज मानकर इट इज सेंट्रल टू आइडेंटिटी एंड लाइवलीहुड. तांकर आइडेंटिटी एंड लाइवलीहुड पाई कि इट इज वेरी इंपोर्टेंट तांकर जो कस्टमरी लैंड ओनरशिप ऑफ इंडिजिनियस कार्बी कम्युनिटीज. ଯେତେବେଳେ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ସେଟଲର୍ସ ଆସିଲେ ଇନଫ୍ଲକ୍ସ ଅଫ୍ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ସେଟଲର୍ସ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଲିଏନେସନର ଯୋଉ ଫିୟର ଥିଲା ସେଟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହେଲା. intensified fears of land alienation. And weak land records and informal transactions eta create kala dispute and insecurity. ये गोटे इनसिक्यूरिटी एंड डिस्प्यूट क्रिएट कला. फर्दर गोटे परसेप्शन एटा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और एनक्रोचमेंट सेटा ट्राइबल कंसेंट को बायपास करिवो एटा फर्दर रिजेंटमेंट को फ्यूएल कला.
encroachment. It further fueled resentment. Okay. Sixth schedule autonomy रो जो promise and limits कौन? Sixth schedule से legislative and executive powers grant करूची over land, forest and local governance to whom? To autonomous councils. Legislative and executive powers କାହା ଉପରେ ଅଛି? Autonomous councils ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗରେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କ୍ୟାପାସିଟି କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଏଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ରେଗୁଲେସନ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ସକୁ ଲିମିଟ କରେ। It limits effective regulation of land transfers. Overlapping authority between the state government and autonomous council एटा administrative ambiguity को lead करे। State government and lead to administrative ambiguity. Allegations of elite capture and uneven benefit एटा trust को undermine करूची in autonomous institutions. Interaction between land and autonomy. Effectively जदि land protections को enforce करा जिबोनी जदि सेतरे failure देखा जिबो it will weaken the credibility of autonomy. Land protection को जदि ठीक से effectively ताको enforce करा जिबोनी autonomy it will reduce or weaken the credibility of autonomy. Then जो ethnic groups माने रहिले competing ethnic groups माने जो रहिले interpret autonomy either as exclusionary or insufficient deepening polarization. Polarization. Okay. Then जो political mobilization रहुची around the land rights it transforms the administrative disputes into ethnic confrontation. Into ethnic confrontation. Conclusion जो टेंशन चलची कार्बी आंगलोंग रे एटा गोटे इटा अंडरलाइन करूची कि ऑटोनॉमी विदाउट इफेक्टिव गवर्नेंस it can aggravate or increase rather than resolve ethnic anxieties. Ethnic anxieties. Domestically, land administration, jurisdiction, inclusive development, एगुड़िक strengthen करिबा बहुत important. So important कौन? Land administration, proper land administration,
jurisdiction, inclusive development, strengthening them is very important. ठीक ଅଛି. Revitalizing sixth schedule institutions with transparency, capacity building, and inter-community dialogue. These are actually the key to sustain peace in multi-ethnic borderland regions. Okay. So, छटा जाक क्वेश्चन आम डिस्कस कर सारचे. थैंक यू फॉर वाचिंग. नेक्स्ट क्लास रे आमे आरो छटा क्वेश्चन जोटा कि ए वीक रे कंडक्ट हबो एग्जाम ता ऊपर डिस्कशन क्लास कंडक्ट हबो. सो जो माने लाइव देखि नांदी से माने रिकॉर्डेड भी एटा देखि परिबे, बट डू वॉच द सेशन. आई होप समस्ते टेस्ट दउथिबे. जो माने टेस्ट अपियर करि भी नांदी से माने भी डिस्कशन क्लास जॉइन करि परिबे. एंड डिस्कशन क्लास रे मु जहा भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स किछि कहूची ताको निज नोट्स को ऐड कर परिबे फॉर रिविजन पर्पसेस. सो ओके, थैंक यू.